पानी बिल्कुल ख़राब हो गया है। पहले हम ये पीते थे, आज हम ये नहीं पीते। इसमें अगर हाथ डालेंगे तो इन्फेक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसमें पोल्यूशन हो गया। हम तकरीबन 9 से 10 टन पर डे सॉलिड वेस्ट डल से निकलता है। यहाँ पे गंदगी होगी तो यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं आएगा, कोई भी कस्टमर नहीं आएगा, और यहाँ पे अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे तो यहाँ पे हाउस बोट ओनर को भी कोई पैसा नहीं मिलेगा। Kaha, 16 things mix. Almond, walnut, cashew nut, honey, saffron, cardamom, cinnamon, ginger, chai patti, shangram, kazaban, sabistan, mulati, rose leaves, magas, dates, and Hindustan, Pakistan also mix. Dal Lake in Srinagar, a haven of serenity, known for its houseboats, shikara rides, and the vibrant floating vegetable markets that come to life at dawn. Local farmers in boats gather on the Dal Lake, contributing to the unique charm of these floating vegetable markets. Among them is 64-year-old Muhammad Abbas Malik, who has been selling vegetables there for 4 decades. Malik says he has never found the lake so polluted, its shrinking size negatively impacting vegetable yields. हम सालों से तकरीबन 7 पीढ़ी से ये काम करते हैं, लेकिन आज इस वक्त हमारी जो बच्चे हैं ये नहीं चाहते ये काम। क्यों? इसमें पैसा बराबर नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ हम लेते हैं इस मंडी में, यहाँ 2 मंडी है, एक कनी कच्ची में, एक कांडमाला में। यहाँ ग्राहक हमें नहीं आता है रिटेलर वाला नहीं आता यहाँ। 14 से जब सैलाब यहाँ आई तब से यहाँ बिल्कुल मंडी बंद हो गई है। कुछ आदमी ही निकलते हैं बस, और हम बहुत इसमें मेहनत लगाते हैं, और खाद बिल्कुल हम नहीं लगाते, ये नेचुरल हम बनाते हैं। यहाँ के ये पानी के अंदर जो उसको बोलते हैं हिल, वो हम निकालते हैं, वही लगाते हैं, खाद वाद हम नहीं लगाते। अच्छा ये निकलते हैं, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। Despite this being a traditional practice passed down through generations, Malik's children are uninterested in selling vegetables due to the mismatch between effort and returns. हाँ, इतनी ख़राबी हो गई, पोल्यूशन, ये पानी बिल्कुल ख़राब हो गया है। पहले हम ये पीते थे, आज हम ये नहीं पीते। इसमें अगर हाथ डालेंगे तो इन्फेक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसमें पोल्यूशन हो गया। ये वजह है, गवर्नमेंट ने पहले इसमें ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, ये ग्रीन बेल्ट है, आपने यहाँ पोल्यूशन। हम खुद इसको साफ कर पीते हैं ये पानी, आज इसमें हम हाथ नहीं डालते। क्यों? वजह यह है, सारे ड्रेनों को यहाँ से ही ये नाली किया है। उनका गोल इसी तरफ किया, जिस तरह गन को ये मुजरिम की तरफ ये नली होता है, इसी तरह ये सारी गंदगी इसी तरफ डाल दिया। The vegetable market is not just a hub for vegetable sellers, it's a unique peek into life in Kashmir itself. The market is bustling with traders selling everything from tomatoes, cucumbers, water chestnuts to the famous Kashmiri delicacy nadru or lotus stems. And that's not all. Locals also offer an array of fruits and flowers. This floating market plays a crucial role in supporting local businesses.
many who don't have permanent shops, instead, they conduct their daily business right from their boats. The floating market is not only a local gem, but also a magnet for tourists. Vendors navigate the waterways, allowing customers to make purchases directly from their boats. Here for the first time to Kashmir. We had seen reels. That is how we came to know that about floating market. And the morning ride was very nice, and we got to see many vegetable sellers, and yeah, it was a good view. मे गई 40 वरी चोट कनान यन तो मगर ये मे रोपये 50 मिलान हतस मन मगर ये खास मिलान वो गवर्नमेंटस वन पन पे कतो ये मदद पे सब्जी मंडी ये खराबी ये कह हिसाब ये बाथरूम नारान 4 बजे सुबह नमाज पढ़ पे वातान बह कांद्र नश तन बह चोट ये पे क्लान नमन गुदरी वाल यह सा ये मंडी वाल घर वाल I am selling Kashmiri saffron welcome kaha 16 things mix almond walnut cashew nut honey saffron cardamom cinnamon ginger chai patti shangram kazaban sabistan mulati rose leaves magas dates and Hindustan Pakistan also mix. Mushtaq Hussain Akhun, the renowned kahwa seller in Kashmir at Dal Lake's floating market in Srinagar. Every morning he ventures out early to whip up this unique Kashmiri green tea with a blend of 16 special ingredients. Saffron honey goodness topped with rose petals and a sprinkle of dry fruits, all adorned with rose leaves. His magical drink is not just a hit with the locals, but tourists are loving it too. As pollution casts a dark shadow over Dal Lake, the consequences are not confined to the water's edge. They reach deep into the lives of a large population residing within the water body. The iconic lake, once a source of serenity and sustenance, is now grappling with severe environmental threats that directly impact the communities calling its shores home. According to a 2018 report, the lake has shrunk from 22 square kilometers to 10 square kilometers. It annually produces a staggering 70,000 tons of lake waste. The annual production of 70,000 tons of lake waste is taking a toll on the delicate ecosystem within Dal Lake. Sewage-derived nutrients trigger algal bloom, transforming the lake's color from tranquil green to a disconcerting brick red, disrupting the harmony of its surroundings. For the people living on the lake, this environmental crisis translates into a direct assault on their way of life. Pollution not only poses a threat to the lake's aquatic life, but also endangers the livelihoods of those dependent on the lake for fishing, tourism, and other economic activities.
we have to understand that this is a very living ecosystem. Dal is not as if it is a non-living thing है कि उसका जो management होगा वो बड़ा straightforward होगा. It is a very challenging subject. And in that respect, जो जैसा आपने बताया, in fact Dal project was started in 1970s, 78 to be specific, annex की reports, and subsequently UED was monitoring Dal conservation. Then in 1997 जो Jammu and Kashmir Lake Conservation Authority बन गई, it was entrusted with the conservation management of the lake. Firstly, we have to understand what are the basic जो challenges रहती है जो conservation of lake के respect में है, वो they are 2-3 basically. One is to address the sewerage issue. Second is the siltation जो normal lake का aging process में होता है. And third are any encroachments or any illegal structures that may come up over a period of time. तो ये तीनों नहेज पे बहुत सारा काम हुआ है. I'll tell you जो हमारा STP sewerage का load है, that is substantially addressed. We have 5 STPs functioning that have been created over a period of time. पिछले 10-15 साल में वो बने हैं that are addressing. जो gaps है वो identified है, gaps को address किया जा रहा है. I'll specifically tell you that houseboats का हमारा issue था regarding the sewerage जो which was sort of going directly into the Dal. It has been addressed and we are about 1 month away from inauguration of the project जो हमारा sewerage जो हमारे Dal का issue resolve कर लेगा houseboats के regarding. As Dal Lake battles pollution, the impact is felt in the daily lives of lakeside communities. The urgency to address this issue goes beyond preserving the lake's natural beauty. It's about protecting the homes, traditions and livelihoods of the people intimately connected to this iconic water body. हम तकरीबन 9 से 10 टन पर डे सॉलिड वेस्ट डल से निकलता है. सम ऑफ इट इज़ कलेक्टेड थ्रू डोर टू डोर, बट सब्सटेंशियल अमाउंट जो हम देख पाते हैं कि वो लेक पेरिफेरी के जो हमारा लेक पेरिफेरी शोर लाइन पे मिलता है. तो ये हम सब की जिम्मेदारी रहनी चाहिए कि अगर हमने चिप्स का पैकेट खाया, अगर हमने बोतल किसी कोई जूस की पी, वो हम इसमें डालें. देयर आर डस्टबिन्स इंस्टॉल्ड है हर जगह पे है. जहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप वो डस्टबिन में डालें, वो आप suitably dispose कर सकते हैं, but it is not to be thrown in the Dal Lake. Standing here on the shores of the Dal Lake, it's hard to believe that this serene water body, once a symbol of tranquility, is now battling environmental challenge. Clearly, a collective effort is needed to restore the pristine glory of this lake. The focus remains on removing weeds like lily pads, algae and water plants. And it's not just the government. Locals, including an inspiring 11-year-old named Jannat, are actively participating in this initiative. Every day she navigates the waters in a humble boat, tirelessly collecting plastic waste discarded by others. Though her efforts may seem small in the vastness of the water, they echo loudly as an inspiration for others to join the cause. Her dedication serves as a spark, igniting a movement where many are compelled to follow in her footsteps. मैं जब छोटी थी तो मुझे ये डल लेक बहुत ही ज़्यादा गंदा था और मेरा पापा जो है
वो पहले से ही इस डल लेक को क्लीन करने का काम करते थे और वो सोशल वर्क भी करते थे। तो उनसे मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा, आप इस डल लेक को क्यों क्लीन कर रहे हो? तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी बताई जिसकी वजह से मैंने रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मुझे भी इस डल लेक को क्लीन करना है, मुझे अपने पापा के साथ इस डल लेक को क्लीन ही करना है। क्योंकि अगर यहाँ पे गंदगी होगी तो यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं आएगा, कोई भी कस्टमर नहीं आएगा, और यहाँ पे अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे तो यहाँ पे हाउस बोट ओनर को भी कोई पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होगी, स्मेल आएगी। तो मैं इसलिए सोचा कि इस डल लेक को क्लीन करती हूँ, थोड़ा सा ही, पर इस डल लेक को क्लीन करती हूँ। Jannat has become a beacon of inspiration. Her dedication caught the attention of none other than Prime Minister Narendra Modi, who took to Twitter to commend her efforts. Jannat's campaign started with a simple request: use dustbins instead of littering the lake. Dal Lake faces challenge from various waste items like disposables and water bottles. Jannat actively raises awareness about the importance of maintaining a clean lake. मैं बोलना चाहती हूँ, मतलब यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट आता है, यहाँ पे जैसे लोकल भी होते हैं, मतलब जो होते हैं यहाँ पे कूड़ा लेने वाले होते हैं, वो आते नहीं हैं, मतलब वो मंथ में एक बार आते हैं और आते ही नहीं हैं। तो बहुत सारे लोग मजबूर होते हैं इस डल लेक में कूड़ा फेंकने के लिए। किसी का डस्टबिन बड़ा हो जाता है, कुत्ता है बिल्ली फेंक देता है पानी में। तो मैं बोलना चाहती हूँ, एक वो रेगुलरली आए इस डल लेक में कूड़ा लेने के लिए। और यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आता है, मैं उनको बोलना चाहती हूँ, अगर आप कुछ भी खाए वो आप डस्टबिन में डालें, और अगर आपके पास डस्टबिन शिकारा में नहीं है तो आप वो बोट में ही रखें, और जो शिकार वाले हैं उसको आप बोलिए कि आप डस्टबिन में बिलवाड़ पे डालिए। Behind Jannat's passion is her father, Tariq Patlu, who taught her the significance of preserving Dal Lake's cleanliness. मैं एक कस्टमर के साथ था, ही वॉज फ्रॉम जर्मनी। तो हम एक एरिया में जा रहे थे रैनावाड़ी की साइड से, तो वहाँ पे इतनी सारी गंद थी कि आपको ना बहुत सारा वो गंदगी वहाँ ज़्यादा थी और स्मेल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। तो वो जर्मन ने क्या किया, उसने अपना सिगरेट निकाल के पिया और उसके बाद में उसने पानी की बूंद से बुझा दिया और अपने जेब में रखा। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये भाई, इसने कंट्रोल किया इतनी सारी गंद, और इसने एक सिगरेट बिट को कंट्रोल किया है, उसने इसको पॉकेट में रखा है। मैंने सोचा अगर ये कर सकता हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो दैट्स वाज अ बिगिन कि जब मुझे ये एहसास हो गया, नहीं हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। But Dal Lake did not always find itself grappling for survival. There was a time when its pristine beauty and tranquility painted a vastly different picture. In the 60s to 80s, this iconic lake served as a backdrop for the shooting of several memorable Bollywood songs and movies, reflecting an era when pollution and litter were distant concerns. The lake's significance deepened during the visit of the legendary Beatles in July 1966. George Harrison, already a fan of Pandit Ravi Shankar's music, embarked on a journey to India and purchased the sitar from Ricky Ram's music shop at Connaught Place in Delhi. Returning later that year with his wife, Harrison sought sitar lessons from Ravi Shankar. Fleeing the overwhelming fan presence in Delhi and Bombay, Harrison and Ravi Shankar sought solace and anonymity on the serene Dal Lake, residing on a houseboat. Harrison often reminisced about those days, sharing stories of sitar lessons on the Dal Lake.
This nostalgia drove Beatles enthusiasts to Kashmir, hoping to locate the original houseboat. Although the original no longer stands, the owners of Claremont Houseboats have painstakingly recreated it, complete with the old visitors' book containing entries from both Ravi Shankar and Harrison. The owner of Claremont, Manzoor Ahmed Bhatt, fondly recalls the musical ambience that filled the houseboat, with music echoing from dawn till dusk. जॉर्ज हैरिसन 67 में यहाँ आए हैं इंग्लैंड से। पहले बॉम्बे आए तो उनको स्टार सीखना था रवि शंकर जी से। तो बॉम्बे में उनको बहुत क्राउड वहाँ जमा होती थी जहाँ पर वो रहते थे। तो फिर उन्होंने रवि शंकर जी को बोला कि मैं किसी आइसोलेटेड जगह जाना चाहता हूँ जहाँ हम आराम से बैठ सकते हैं, सुकून से बैठ सकते हैं। तो मैं सुकून भी थोड़ा सा ले लूँगा और आप साथ ही साथ आप मुझे ये भी सितार बजाना भी सिखलाएंगे। तो उन्होंने रवि शंकर जी मेरे ग्रैंडफादर को जानते थे, तो रवि शंकर जी ने बोला हम कश्मीर चलेंगे भट्ट साहब के पास, दैट इज़ द बेस्ट प्लेस, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ ही रहेंगे 5-6 दिन, आपकी सैर तफरी भी होगी और हमारा आपका ये काम भी होगा, आपको मैं अच्छी तरह वहाँ सुकून से सिखाऊँगा कि सितार कैसे बजाना है। The influence of Srinagar's stunning scenery, particularly the Dal Lake, is believed to have inspired Harrison's lyrics. And the time will come when you will see we are all one and life flows on, within you and without you. From the iconic song Within You Without You on the Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band album. This album, released shortly after their Indian stay, was also a tribute to Harrison's guru, Pandit Ravi Shankar. गवर्नमेंट टूरिज़म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ JNK उतनी पब्लिसिटी नहीं कर पाई है कश्मीर के टूरिज़म के बारे में इंटरनेशनली, लोकली, डोमेस्टिकली आप छोड़िए, इंटरनेशनली मैं कहता हूँ जितनी पब्लिसिटी JNK टूरिज़म, इवन इंडियन टूरिज़म को कश्मीर क्लेयरमाउंट की वजह से हुआ है। अगर आप देखेंगे हमारे पास इतने सारे अखबार पड़े हुए हैं, मैगज़ीन्स तो बात ही नहीं है। वी हैव हंड्रेड्स ऑफ मैगज़ीन्स, फॉरेन मैगज़ीन्स, जिनमें कश्मीर के टूरिज़म के बारे में लिखा गया है। दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ क्लेयरमाउंट। From floating markets to houseboats, the heart of Kashmir beats within these waters. A commitment to its well-being will determine whether Dal Lake will continue to be a source of inspiration and sustenance for generations to come. In Srinagar with Amir Chasti, Zafar Iqbal for Mojo Story. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust
joining us.